کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں. So we are those people. اس فیلسٹیشن فنکشن میں موجود ہے and it is no less than honor once again to see our worthy guests, distinguished personalities, great luminaries having come to grace this all important program of Sky Classes. ماں باپ اس کو کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرے، چاہے ماں باپ بیٹا آپ کا ان پڑھ بھی ہو، پیرالائز بھی ہو، مگر ماں باپ ایکچولی ڈاکٹری جو ہوتا ہے نا بیٹا، ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کا علم اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا اس کا شفا امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اور اللہ پاک شفا کسی ڈاکٹر کو دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا. اور شفا اسی کی آنکھوں میں ہوتا ہے جو اپنے پیشنٹ کو شفقت کی نظر سے دیکھے. تو پیشنٹ کو شفقت کی نظر سے دیکھنا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بیٹا آپ کہاں پہنچے. حیران ہے سب مجھے اونچائی پہ دیکھ کر، کسی نے میرے پیر کے چھالے نہ دیکھے. اگر آپ دیکھیں گے بیٹا یہاں پہ سارے بچے بیٹھے ہیں اور ادھر سے جو بچے بیٹھے ہیں بیٹا یہ ایسے یہاں نہیں پہنچے، انہوں نے بہت محنت. اور جو ڈاکٹر صاحبان وہاں بیٹھے ایسے ہی وہاں نہیں بیٹھے ہیں، انہوں نے بیٹا بہت محنت کی، میں اس کا گواہ ہوں. ایک چیز ہے کہ بیٹا ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ، ہمیشہ بیٹا. میں نے کھانے کا آپ کا جب طواف کیا، میں نے جب کھانے کا آپ کا طواف کیا، مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں. میں نے وہاں جب طواف کیا، میں نے ایک طواف کیا، میری مسز بھی میرے ساتھ تھی، تو میں نے مسز کو بھی کہا کہ میں نے جو طواف کیا میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی ایک طواف کیا. میں نے جتنے بھی بچے آج تک پڑھائے ہیں، جب تک کی دنیا میں زندہ ہوں جب تک پڑھاؤں گا تو ان بچوں کے لیے بھی طواف. سو آپ نے بھی بیٹا ایک طواف کیا ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد، کیونکہ آپ کے صدام سر نے وہ طواف آپ کے لیے کیا. میں یہی کہوں گا آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو، اور اپنے ماں باپ کا حق ادا کر. کیونکہ آج کے بچوں میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو اپنے پیرنٹس کے بارے میں کچھ اندازہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس خدا کے بعد سب سے بڑی دولت ہماری. اور آج کا بچہ جو ہے جب وہ پیرنٹ کے ساتھ تھوڑا بہت اونچی آواز میں بات کرتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. خدا کے بعد ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے. اس کلاس روم میں، اس مجمع میں کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کے ماں باپ ان پڑھ ہوں گے. اب آپ ڈاکٹر بن گئے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ ان پڑھ ہے تو ہم نے کچھ کیا. اگر آپ کچھ ہو پہلے خدا کی مدد سے اور پھر ان کی دعاؤں کی وجہ سے. نہیں تو بیٹا انسان کی بساط نہیں ہوتی کہ جو مجھے اللہ نے دیا میں اس کے لائق نہیں تھا. عام طور کوئی کہتا ہے میں قابل ہوں، میں نے سب کچھ کیا، اپنے بلبوتے پہ کیا، کہ اس کی غلط فہمی ہے. آپ سے بھی بہت سارے بچے ٹیلنٹڈ ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کی اس کامیابی میں 99.9% جو بیٹا کام کرتا وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. اور ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھانا. آپ بڑے نہیں ہو، آپ ماں باپ کی نظروں میں وہی رہو گے جس دن آپ پیدا ہوئے تھے. ماں باپ آپ کو اسی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. سو ڈونٹ بریک دیئر ہارٹ، کیونکہ جس کا ماں باپ راضی نہیں اس کا خدا راضی نہیں ہو سکتا. اور جس کا خدا راضی نہیں ہوتا ہے اس کو زندگی میں نہ یہاں چین آتا ہے نہ آخرت میں چین آتا ہے. اس لیے بیٹا لو یور پیرنٹس، دے آر نیکسٹ ٹو گاڈ، دے آر نیکسٹ ٹو اللہ. ان کے سینٹیمنٹس کا پورا خیال رکھیں. I congratulate you, I compliment all of you, the achievers of the NEET 2025 from this time. میں آپ کے ساتھ میں آپ کے پیرنٹس کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور پیرنٹس کے ساتھ میں آپ کے جو ٹیچرز رہے ہیں right from the early stage when you are in some primary secondary schools to your college level and now to the Sky Center wherein you have been groomed. میں اسکائی سینٹر کے جو آرکیٹیکٹ ہیں ڈاکٹر صدام کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ. I have been a teacher like Saddam Hussein, Dr. Saddam. میں نے ان کو مینٹور کیا ہے in my university. He is the alumnus of this course. I have mentored him. So مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. I feel very proud of it. Since then 3.5 years have passed, تب سے 22 سے آج تک, اور آج ہماری یونیورسٹی کو 84 پیٹنٹس ملے ہیں. 84 پیٹنٹس. The question is, what do we understand by that getting the patents? Is that we are trying to convey to the students, communicate to the students that it's not just learning and earning the degrees only. You have to be educated, you have to be skillful, you have to be knowledgeable.
and you have to be critical thinkers. And that's where your journey starts from now on. You have just crossed that first ladder. The first step of that ladder you have put on is exam ko cross karke. And you have a long way to go ahead. We are in the 21st century aajkal. It's very challenging than it was before. And when you are in 12th, 9th, 12th, आपका अपने कैरियर चूज करना था, and that career you choose medicine as a career. But now is this as your mission? What has been said to you? My dear students, let me just, especially the ones who are on this side of the dais, is that in this 21st century, you have a very, very tough competition. In the year 2022, I was in schemes, interacting with the doctors and the schemes, and we were just trying to just foresee the future of the medical profession. अभी तक हमारा डॉक्टर अपने पेशेंट्स को इलाज करता है. He is the one who would just treat the patients. I believe the way the education is still happening in India, the doctors which would be churning would be something like the technicians working behind the machines. एक हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर से एक बहुत ही मशहूर फिजिशियन गुजरे हैं, डॉक्टर अली मोहम्मद जान. शायद आप बच्चों ने नहीं सुना होगा, लेकिन मेरे साथ जो सारे सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं उनको पता है. So who Dr. Ali Jan was famously known. He was a doctor, but he was more of a psychiatrist. He was a psychologist. उस जमाने में इतने बड़े एडवांस किस्म के टूल्स, डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल नहीं थे जो आज हैं. तो एक पेशेंट का पल्स फील करके, उसके हार्ट को एक आस्कल्टेट करके, डॉक्टर अली मोहम्मद जान वुड जस्ट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन्स. और उसका जो डायग्नोस्टिक रेट है उस जमाने में वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी सिग्निफिकेंटली वेरी हाई, मे बी 90% से ज्यादा. A famous doctor. But now because we have the tools available today, enabling you to be very precision and very specific. So my dear students, you have entered this career. आपको देख रहा है कि आपने जम्मू कश्मीर को, you have to make Jammu Kashmir proud of. You have not to be just the doctors which we produce otherwise in the country. You have to be also the knowledge creators, the knowledge generators, the technology generators. You have to be the ones who will be coming up with a new kind of inventions in the medicine. Because that's what I was just trying to communicate to you, कि अभी तक ये आपकी सिर्फ उस सीढ़ी का पहला कदम जो आपने रखा है. और जब आप वापस आएंगे, once you just complete your degrees, we expect you to be very highly skillful. We wish you that you serve this society with passion and you will lead this society with an example. हमारे इस कश्मीर में बहुत सारे प्रोफेशनल्स की जरूरत है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट की भी जरूरत है. बट वी हैव पास्ड थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स इन कश्मीर. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस जम्मू कश्मीर में जो एक प्रोफेशन है वो साइकियाट्रिस्ट. हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक मेंटल हेल्थ सेंटर खोला है. आई टेल यू दैट वी हैव अ पॉलिक्लिनिक इन द यूनिवर्सिटी वेयरइन वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव सम medical counseling to the students, but most of the students which come to us, we give them the mental counseling. That's some very important profession. The community health is one very important, जैसे डॉक्टर खान साहब यहाँ बैठे हैं, and the rural doctors. Let me just share with you an example. एक कंट्री का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है, वहाँ पे वो डॉक्टर्स को कैसे रेट करते हैं. जो डॉक्टर वहाँ पे पेरी अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में जो काम करते हैं वहाँ पे डॉक्टर, they are just serving some kind of a hamlet. Now, how do they rate the doctors in those villages? अपने इंडिया में क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में वो डॉक्टर सबसे अच्छा माना जाता है जिसके पास पेशेंट फ्लो सबसे ज्यादा हो. This is how do we rate the doctors. But in that country, उस हैमलेट में उस डॉक्टर को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है जिसके पास पेशेंट फ्लो सबसे कम है. आप शायद इसको समझ नहीं पाए. वो इस तरह से
that doctor in that hamlet, in that village, in that peri-urban area is not supposed only to just have the patients in his clinic and prescribe some medicines and to send them home. A doctor is the one whose patient is the social service. That doctor in that hamlet of the village will go to those people in his area, वहाँ पे उनको एजुकेट करता है, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, उनके डाइट के बारे में, एंड हाउ टू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, जिसकी वजह से वहाँ पे इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस बहुत कम है. तो जिस डॉक्टर के पास ज्यादा पेशेंट आते हैं, that means that he is not rendering his service to his area better. So I would say, जब आप इंशाल्लाह वापस इस प्रोफेशन से डिग्रियां हासिल करके आएंगे, आपका we are not living in that advanced country as the other parts of the world are there. आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप यहाँ पे आके उसी तरह से उसी जज्बे से काम करेंगे. You are the future of this state, you are the future of this nation, and every one of you has some special abilities, special qualities. Every one of you is a very special child. Please be very thankful to God who has brought all of us to this world. And then the best way to thank God is that how do we serve the humanity and how do we serve other people on this world. Thank you very much and God bless you. इनसे हम वही बात कर सकेंगे कि आने वाला वक्त जो है, जो इन पे जिम्मेदारियां हैं, वो कैसे निभानी चाहिए. अभी तक हम सब इस उम्र से गुजर चुके हैं. अभी तक एक बच्चे को ये लगता है कि मुझे ज़िंदगी के मुस्तकबिल के लिए, अपने कैरियर के लिए कुछ करना है. चाहे डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आर्किटेक्ट, लॉयर, व्हाटएवर ही बिकम्स. लेकिन जबकि वो ऑप्शन इसके लिए ख़त्म हो जाते हैं और वो अपना पाथ, अपना जर्नी, अपना सफ़र तयन कर लेता है. इन बच्चों ने अपने लिए मेडिसिन को एक अपना सफ़र बनाया और अपनी एक मंजिल बनाई. ये तो नहीं सिर्फ इनकी तरबियत की बात, लेकिन इनसे मैं कुछ और अलग बात कहना चाहता हूँ. वो ये है कि आपको ये प्रोफेशन जो आप ले रहे हैं, ये बड़ा पर्सनलाइज्ड प्रोफेशन होता है. जैसे वकील का पर्सनलाइज्ड प्रोफेशन होता है, डॉक्टर का भी बड़ा पर्सनलाइज्ड प्रोफेशन होता है. इस वजह से चूँकि अपनी सर्विसेज रेंडर करता है, ये कोई चीज़ बेचता नहीं है. ही डजंट सेल ए प्रोडक्ट बट ही रेंडर्स हिज सर्विसेज टू द सोसाइटी. और सोसाइटी में इंसान जो रहते हैं, जो इनके पास जाते हैं, इनकी मदद हासिल करते हैं, उनके लिए जो सर्विस अदा करता है, वो तो अपने इल्म, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आप तो करेंगे. लेकिन एक बात हम हमेशा रखिए, उस सर्विस रेंडर करने से पहले आपको बहुत ज़रूरी एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा. जब आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे डॉक्टर. अगर आप बुनियादी तौर इंसान अच्छे नहीं हैं तो आप डॉक्टर भी अच्छे नहीं बन सकते. अब इंसान बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए? आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी और हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट. आज के ज़माने में देखा गया कि जो भी पेशेंट होता है वो बेचारा बड़े उदास होता है, उसे मुसीबत होती है, उसे दर्द होता है, वो डॉक्टर के पास भागा भागा चला जाता है. लेकिन डॉक्टर का जो रिश्ता बन जाता है इस पेशेंट के साथ, जो उसकी रिएक्शन, जो उसका रद्द-ए-अमल होता है, वो उस पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है. डॉक्टर का उसे खुश असलूबी से बात करना, तरीके से बात करना, उसके जज्बात को महसूस करना और उसके बाद उसका इलाज करना पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त मायने रखता है. ये एक बहुत ज़रूरी बात है. मैं खुद एक पेशेंट रह चुका हूँ, मैं इसकी अहमियत को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ. और आप लोग भी वैसे डॉक्टर से सबको अल्लाह ताला दूरी रखे, लेकिन ज़िंदगी में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तो पड़ती ही है. तो ये सबको महसूस हुआ होगा कि इनको जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छा डॉक्टर भी बनता है. 21वीं सदी के बच्चे को जो है उसका लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. वो इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन हो गई. आप अपने काम को देखिए, ये डॉक्टर आपको बता देंगे कि आज तो अमेरिका का डॉक्टर वहाँ से किसी भी पेशेंट को श्रीनगर जैसे शहर में इलाज कर सकता है.
اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کہاں پر ہے. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کا لیول آف کمپٹیشن جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ کے ماں باپ ڈاکٹر ہیں یا آپ کے کوئی دادا دادی ڈاکٹر تھے وہ وقت الگ تھا, لیکن یہ وقت آ گیا اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی اور کمپیٹ کرنا ہے. اپنے اندر وہ اعتماد پیدا کرنا پڑے گا کہ آپ کسی سے بھی کم نہیں. اور یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کسی سے کم نہیں, میں شہر سری نگر کی بات نہیں بتا رہا, میں وادی کی بات نہیں بتا رہا, میں بھارت کی بات نہیں بتا رہا ہوں, میں تو گلوبل بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا بڑا ہم بہت مطلب ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک کشمیری ڈاکٹر جو ہے انگلینڈ میں ہے, ڈاکٹر اویس جیلانی ان کا نام ہے. ریسنٹلی ہم نے سنا کہ ان کو وہاں کی جو کوئین ہے انہوں نے ان پر بڑا ایک ایوارڈ کانفر کر دیا ہے. عزت تو اس کی اپنی جگہ ہے, وہ پیسے اپنی جگہ بتائیں گے, لیکن چونکہ وہ ریاست سے تعلق رکھتا ہے, وہ ریاست سے تعلق رکھتا ہے, تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہم میں سے ایک ہے. یہ ہمارا جذبہ ہوتا ہے. آپ اپنی محنت کریے, آپ اللہ اور عزت دے اور پیسے دے, زندگی اچھے رکھیے, لیکن یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ لگتا ہے کہ آپ ہم میں سے ہیں. یہ خود اپنی جگہ ایک عزت محسوس کرتے ہیں, تو آپ کو وہی بن کے دکھانا ہے. یا آپ پر ایک ذمہ داری بنتی ہے, بہت ذمہ داری, اس کا احساس آپ کو آنے والے وقت میں ہوگا. اور ایک بات اور بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے ٹیچرز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ آپ نے ہزاروں بچوں میں امتحان پاس کر دیا. اس کے جو ڈاکٹر صدام نے جو ایک کمی کو محسوس کیا کہ ہماری جو گورنمنٹ سکولز ہیں شاید وہ اس معیاری تعلیم شاید ادا نہیں کر پا رہے ہیں, تو اس کمی کو محسوس ہوتے ہوئے انہوں نے جو یہ ادارہ کھولا ہے SKI, جہاں سے آپ خود پڑھ کے آئے ہیں, اور شاید آپ کو فرق محسوس ہوا ہوگا. اس کے لیے واقعی وہ ایک تعریف کے حقدار ہیں. لیکن آپ لوگ جو وہاں سے سیکھ کے نکلتے ہیں, یاد رکھیں لٹریسی اور ایجوکیشن میں فرق ہوتا ہے. لٹریسی ہوتا ہے یاد رکھنا. اب آپ بتائیں گے اس کو بخار ہے, اس کو پیراسیٹامول دے دو, یہ تو میں بھی بول سکتا ہوں, لیکن میں ڈاکٹر نہیں بنتا. ایک بڑی سی مشہور مثال ہے, طوطے کو بھی اگر سکھائیں گے بولے گا 2 × 2 = 4 ہوتا ہے, لیکن وہ میتھمیٹیشین نہیں بنتا. جواب تو اس کا درست ہے. آپ کو ایجوکیٹڈ ہونا پڑے گا. اب ایجوکیٹڈ کیا ہوگا؟ آپ کو جو آپ کا علم ہے اس کو سمجھنے کی, اس کو ایبزارو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر آپ کے اندر آپ کا ذہن جو ہے وہ ویسے اچھے خیالات پیدا کرتا ہے. آپ ریسرچ کر لیتے ہیں. ہمارے کشمیر میں انفارچونیٹلی انسیڈنٹس آف کینسر نالجبل ایسا لگتا ہے جیسے کچھ زیادہ ہو گیا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا لائف سٹائل غلط ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا غلط ہے, ہمارے واردان غلط ہیں. کیا چیز غلط ہے؟ یہ ایک پیشنٹ کو کون بتائے گا؟ وہ وہی ڈاکٹر بتا سکتا ہے جو ریسرچ مائنڈیڈ ہوتا ہے, وہ اس کا علاج ڈھونڈتا ہے, سولوشنز ڈھونڈتا ہے. اور یہ تب ممکن ہے جب آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے. لیکن جب آپ خالی لٹریٹ ہوں گے کہ ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے, اس دوائی کو یہ دینا, اس کو یہ دینا, وہ دینا, تو ٹھیک ہے, آپ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ زبردست ڈاکٹر نہیں بن سکتے. اور ایک بات اور یاد رکھ لیجیے کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خیالات کو ڈسکس کرتے ہیں. جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں. جو تھوڑے کم ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور جو اس سے کم ذہین ہوتے ہیں وہ انسانوں کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو ذہین بننا پڑے گا, آپ کو آئیڈیاز کو ڈسکس کرنا پڑے گا. آپ کو یہ دنیا جو ہے دس از اے بیٹل آف آئیڈیاز نا, اس میں کوئی جنگ نہیں ہے, یہ خیالات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. آپ سمجھتے میری بات؟ آئیڈیاز کا ٹکراؤ ہوتا ہے. تو آپ کے آئیڈیاز کو معیاری بنانا, مستحکم بنانا, جس کی جڑیں مضبوط ہیں, آپ کو پڑھائی جو ہے وہ ایبزارب کر, اپنی پروفیشنل پڑھائی خالی نہیں,
जैसा कहा गया कि इसके बाहर भी जो है बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ विजडम है इस दुनिया में, आपको अपने आप को उससे भी आरास्ता करना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारियां अभी आपके लिए शायद उतनी नहीं है, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, अभी आपको MBBS पास करना है, उसमें 4-4.5 साल लगेंगे आपको। I compliment the sky for having this lot who have come to the medical school now. This journey is one of the toughest for most of you, and I believe in coming days those who are sitting there are encouraged enough to come to this site, inshallah, most of you, I believe. And that is not the end of your life. Even if you don't make it to the medical college, world is big enough to honor you, respect you, and make you prosper. While these students have come up successfully in their first examination, this is just the beginning. This examination is the first step, while they will face many more difficult examinations during their MBBS course. So this is not just the end, this is just the beginning for you. I am not just making you frightened, but your commitment to this subject starts now. So my best wishes to all of you here, and wish you a successful and a prosperous and blissful life here and afterwards. Thank you very much. पहले मैं इस काबिल समझता ही नहीं हूँ कि मैं अपने टीचर के सामने खड़ा हो जाऊँ, तो मगर आज मौका मुझे मिला है पहली बार कि मैं उस टीचर को कॉन्ग्रेट्स करूँ कि जिससे मुझे एक राह दिखाई। क्योंकि मुझे आज भी याद है, सर हमें जेनेटिक्स पढ़ाते थे, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया 2003 से जब मैं पढ़ाने आया, तो मैंने उसी जेनेटिक्स को जो सर ने मुझे सिखाया था, तो उसी जेनेटिक्स को मैंने अपना हथियार बनाया। और बिलीव मी, जब मैं पहले पढ़ने आया तो कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है, तो अगर सदाम सर बना तो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे टीचर्स की, स्पेशली सर की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इससे बड़ा कोई मंच मुझे नहीं मिलेगा, कोई बड़ा स्टेज नहीं मिलेगा जहाँ पे मैं सर को कहूँगा सर थैंक यू। बात नहीं कर पाता हूँ मैं सर के पास, आंखें नहीं मिला पाता हूँ मैं, क्योंकि एक हया होती है, एक शर्म होती है, तो मगर फिर भी मैं सर को बहुत थैंक यू कह रहा हूँ कि उसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज मैं सर के साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक ज़रा भी नहीं हूँ सर के सामने, मगर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आज दिल से ज़्यादा खुश हूँ कि मैं सर के साथ खड़ा हूँ। Wonderful words by Dr. Saddam. A teacher who teaches without inspiring is hammering at cold iron. This is the inspiration that Sir has got, and this inspiration is obviously going to be with you also for all your teachers. It's a matter of immense pleasure to me that I am attending this function on behalf of my daughter Sadat Tashir, who is one of the senior. I extend my gratitude and all well wishes and thanks to the institution, especially to Sadat sir and all the employees. सद्दाम साहब के बारे में जस्ट एक बात, उनकी बहुत डिस्टिंग्विश्ड थी, ज़बरदस्त पैशन था, पहले से ही कुछ करें। उसने जब ये स्टार्ट किया ट्यूशन वगैरह, उनको पता है मेरा ट्यूशन के बारे में एक अलग नज़रिया है, बट द वे ही ट्राइड टू एडवेस्ट फैशन सोल्स, कि उनके अखलाकी स्पिरिचुअल तरबियत भी करें, वो बड़ी बात है। अगर अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, देखिए आज की डेट में 90% डॉक्टर्स के बारे में लोगों का परसेप्शन ठीक, because they have no time to give attention, and it is attention that heals. मल्टीडायमेंशनल एस्पेक्ट पर फोकस करना है। फोकस एक तरीका है जिसके साथ आपको एक मेहनत, फोर्स और मैग्नीट्यूड के साथ, आपको शिद्दत के साथ काम करना है। To have a proper direction with some purpose in life. लाइफ का पर्पस, उस पर फोकस करना है। I wish you good luck and the best of luck for your future endeavors. खान साहब है, ये पिछले 24 साल से मेरे साथ, इसके बारे में अगर मैं कहूँगा तो लफ्ज़ भी कम बयान होंगे, क्योंकि ये वो बंदा है बेटा जो आप कूड़ा बेटा डालते हो क्लासेस में, छोट चुतरावा क्लास में, यही तो वो बंदा है बेटा जो उसको साफ करता है। और आपके क्लासेस मुझे एक जगह तकलीफ होती है कि जब कहते हैं कि स्काई क्लासेस में सदाम सर चेयरमैन है। बेटा चेयरमैन मैं नहीं हूँ, झूठ, मगर असली जो काम करते हैं बेटा बिहाइंड द सीन्स वो यही लोग हैं। अगर हम देखते हैं बेटा कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स बेटा दिन रात काम करते हैं और वो फिर एक मिशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है, जैसे यूनिस साहब है, उमर साहब है, या हमारे बाकी जो
काम इरफान साहब है, तो ये दिन रात काम करते हैं, मगर वो काम किसी को दिखता नहीं है। टीचर का काम हर किसी को दिखता है, टीचर के जो पीछे काम करते हैं वो किसी को दिखता नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि असली हकदार जो कॉमरेड ये आज हम यहाँ पे इवेंट बना रहे हैं, असली हकदार इसके हमारे ज्यादा मैं कहूँगा हमारे एम्प्लॉयज है जो दिन रात काम करते हैं, तो उनका काम जो है वो कोई नहीं देखता। अब सारे कहते हैं कि बस बच्चा सिलेक्ट हुआ, मगर जो एक बच्चा सिलेक्ट हुआ टीचर्स ने पढ़ाया, नो डाउट उसमें कोई शक नहीं, और उसके पीछे जो काम लगा, जो आईटी डिपार्टमेंट हमारा है, जो एग्जामिनेशन सेल हमारी है, जो बाकी जो ग्राउंड स्टाफ हमारा है, वो भी दिन रात काम करते हैं। बिलीव मी कि जब मैं सवेरे उठता हूं तो मेरा जो गेट कीपर होता है वो मुझसे 1 घंटा पहले वहां खड़ा होता है और टीचर्स का दरवाजा खोलता है। तो उससे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है कि वो टीचर को कहता है आइए अब आप पढ़ाइए, मैंने आपके लिए हर कोई चीज तैयार करके रखा है, अब आपको कलम उठाना और पढ़ाना। तो थैंक्स टू ऑल माय स्टाफ एंड माय टीचर्स जिन्होंने पॉसिबल किया कि ये एक जहां जो मजमा है स्टूडेंट्स का, कामयाब स्टूडेंट्स का, इसका क्रेडिट एक एक अफराद को जाता है, राइट फ्रॉम गेट कीपर, राइट फ्रॉम पियन, राइट फ्रॉम स्वीपर अप टू द चेयर। और एक और चीज की जो 2019 के जो सेलेक्टीज थे आज पास आउट हो गए, तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और अभी भी वो ट्रस्ट करते हैं हम पे, हमसे प्यार करते हैं, नहीं तो एक दिन अपना कोई जाया नहीं करता है। और वो भी जब MBBS क्वालिफाई किया, उसके बाद अब इंटर्नशिप भी क्वालिफाई किया, तो फिर भी अभी भी इनको हमारे अपने दिल में टीचर्स का मोहब्बत है। तो यही तो रिफ्लेक्ट करता है कि एक बच्चा जो होता है उसके जिंदगी में कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और उसमें बहुत बड़ा टीचर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। तो हमने इनको बुलाया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इन बच्चों का कि इन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया। नो डाउट हमने इनको पढ़ाया है, मगर फिर आज ये MBBS है, मेडिकल MBBS कंप्लीट कर चुके हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आए, इन्होंने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। तो अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस। तो अल्लाह आपको हर किसी जगह कामयाब करे, जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात है वो पूरी हो जाए, आप इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओ, आखिरत में भी कामयाब हो जाओ। ठीक है, लव योर पेरेंट्स, लव योर अल्लाह, लव योर बुक्स, बस दैट्स ऑल। ये दुनिया में क्योंकि दो मोहब्बतें कभी धोखा नहीं देती है, एक खुदा का मोहब्बत और किताब का मोहब्बत, ये कभी धोखा नहीं देता, ये हमेशा आपके सामने है। अल्लाह आपको इज्जत देता है और किताब आपको रोटी देती है। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम। Now it is time for us to do the felicitation, and that is what is very, very important, and that is what we have come here for in this grand felicitation ceremony. First one we have is Dr. Muzammil Gulzar. Dr. Muzammil Gulzar. Sometime back he was just Muzammil Gulzar, now Dr. Muzammil Gulzar. So what a beautiful feeling, excellent appreciation and achievement from our worthy guest. Dr. Muskan Hamid can now forward and receive this a moment of honor for our worthy guest. Let us put our hands together. Huge applause. Huge applause. Dr. Saddam presenting a token of love on behalf of Sky Classes to our worthy guest. What a great moment for the student. Dr. Musablah. WhatsApp receiving a token of love from Saddam sir. WhatsApp has been undoubtedly a great support in ensuring that educational canvas in Kashmir remains bright and beautiful. Thank you so much, sir. First for the students, please. Congratulations.
देखिए एक्चुअली आज हमने यहाँ पे टैगोर हॉल में बच्चों को फेलिसिटेट किया। जो बच्चे नीट में इस साल क्वालिफाई कर गए तो हमने आज यहाँ पे बच्चों को बुलाया था, तो इसमें हमारे कुछ डिग्निटरीज भी आए थे, वीसी साहब भी आए थे। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बच्चों को, क्योंकि बच्चों की इससे हौसला अफजाई होती है, क्योंकि ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, 3 साल लगातार मेहनत करता है। तो उसके बाद जब इसको फेलिसिटेट किया जाता है किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, तो बच्चे को अच्छा लगता है। और जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, दूसरे बच्चे जिन्होंने अभी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया होता है, वो भी इससे इंस्पायर होते हैं। आप देखिए, खुद आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी आ गए आज इनके साथ, तो पेरेंट्स भी बहुत खुश है, ये बच्चे भी बहुत खुश है। और जो बाकी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशन में इस टाइम पढ़ रहे हैं, जो अब नीट की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगले साल नीट दे रहे हैं, तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो गए। तो हमारी ओपन मेरिट में अराउंड 53 सिलेक्शंस थी, तो और का जो हमारी कैटेगरीज है उनमें भी बहुत सारी सिलेक्शंस हैं, मगर आज हमने उन बच्चों को यहाँ नहीं बुलाया था, तो क्योंकि उनमें अभी हमें तजब्जुब है कि मेरिट कहाँ पे कट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जब हम पूरा लिस्ट जो है जब वो इशू हो जाएगा, तो उसके बाद हम एक मेगा फेलिसिटेशन प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, जहाँ पे हम तमाम बच्चों को बुलाएंगे जो हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे और सिलेक्ट। हाँ, आज जिनका जो 2019 में पास नीट क्वालिफायर्स थे, तो उनका रिसेंटली उनकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट थी, MBBS कंप्लीट हुआ। तो हमने सोचा कि हम तो फेलिसिटेट कर ही रहे हैं इन बच्चों को जो फ्रेश नीट जो सिलेक्टीज है, तो हमने इसी सिलसिले में उन बच्चों को भी बुलाया था। वो भी बच्चे आए थे यहाँ पे जिन्होंने MBBS पूरा कंप्लीट किया था, तो वो भी बहुत खुश थे कि उन्होंने डिग्री कंप्लीट की, तो उनको भी हमने बुलाया था और उनको भी हमने फेलिसिटेट किया। हमें चाहिए कि स्कूल्स में ही, इवन मैं कहूँगा कि राइट फ्रॉम 5th क्लास ही बच्चे को पता होना चाहिए, हमें बच्चे में टैलेंट देखना है कि बच्चे का टैलेंट कहाँ की ओर है, क्या उसका टैलेंट कंप्यूटर्स की ओर ज़्यादा, इंजीनियरिंग की ओर ज़्यादा, मेडिकल की ओर ज़्यादा है या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी अलाइड सर्विसेज है। और बच्चे को बेचारे को एक्सपोजर ही नहीं होता, उसको पूरी तरह से काउंसिल नहीं किया जाता, उसके टैलेंट को नहीं देखा जाता है, तो जिसकी वजह से आगे जाके उसको फिर बहुत ज़्यादा परेशानी उठती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी स्कूल अथॉरिटीज़ यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों पे वर्कआउट करते हैं, मगर साथ साथ वो बच्चों को रिगार्डिंग कैरियर काउंसलिंग के भी सेशंस लगा दे, ताकि बच्चे में जो टैलेंट है उसी के लिहाज से वो उस फील्ड में जाए जहाँ पे वो एक्सेल करे। कि मैं कहूँगा कि फेल होने का कोई लफ्ज़ ही नहीं है, या तो इंसान कामयाब होता है या फिर सीखता है, इंसान कभी फेल नहीं होता है। सो जो बच्चे इस साल ड्रॉप आउट हो गए, उनको एक सबक मिला कि पेपर जो है कभी कभी टफ भी आ सकता है और उसको कैसे टैकल करना, हैंडल करना है। तो इसलिए फेलियर जो है ये कोई लफ्ज़ ही नहीं है। हाँ, इंसान या तो कामयाब होगा या फिर सीख लेता है। मैं कभी नहीं मानता हूँ कि एक बच्चा फेल हो जाता है।